Hi guys, so I'm Shiza. I'm a first year med student at AQU, and today I'll be giving you guys tips on how not to fall for the common entrance exam traps. So let's begin. I basically hadn't studied for the AQ syllabus till after my CIs, and I wasn't aware of the content at all. So I started during June, I think June 3rd, 4th, after my CIs had ended. And one of the first things I did was that I bought the pre-med private university pack because I heard a lot about it from like my seniors and everything, and it had basically everything you kind of needed to do. So what I did was I made a schedule and I used to do about 3 topics a day starting from June. That way I would end my syllabus in July. And then after every topic, मैं कोई 100 MCQs from pre-med के private MCQ bank से करती थी, like the topical ones. And one thing that I didn't realize while studying was that the pre-med notes जो उनके दिए हुए, they're not just revision notes. For bio, मुझे याद है end में मैंने देखा कि the notes that they had on their website were really good. Like I did a lot of chapters. Like I think I did most of the kingdoms and even states of matter and stuff from their notes then because I realized that they're better than the Punjab book. And then in the end, like after I was done with my syllabus once, I moved on to AQEB ke past papers, and then I did the mocks that are on pre-med, and basically everywhere on the internet that I could find yearly papers, I just signed up for them and did them. So one thing that you need to know before you get into AQ studying is that the AQ and MDCAT is the way the paper works because it's kind of different. So there are different types of questions. So थोड़े recall के आएंगे, थोड़े आपको अपना concept लगाना पड़ेगा, और थोड़े बस थोड़े are gonna be like formula based. And the way you're gonna like figure that out is when you practice questions and when you're doing full length papers and you need to like figure out what works for you and what's your weak spot. And the only way you'll actually figure it out is once you're like practicing. जितना भी content कर लो, जब तक आप अपने questions practice नहीं करोगे, जब तक आप देखोगे नहीं कि exam format कैसा है, आप अपने आप को जज नहीं कर पाओगे. But the thing is, some people what they do is they don't do the content at all, और वो सीधा बस papers करना शुरू हो जाते हैं साथ में. The bad point in that is that questions, even though they might be repeated, the paper is still completely new every year. Especially AQ का, MDCAT का फिर भी थोड़ा repeat होता है, but AQ का repeat नहीं होता है. तो उसमें आपको problem ये होगी कि okay, आपको जो questions क्वेश्चन बैंक्स वगैरह में वो तो आते हैं, लेकिन अगर कुछ नया कंटेंट हो तो आप वो बिल्कुल कवर नहीं कर पाओगे. सो रिव्यूइंग द एग्जाम सिलेबस इज आल्सो as important as doing past papers, and in my opinion it's even more, especially if you haven't touched um this syllabus पहले. अगर आप CI आपने बैकग्राउंड किया है, फिर आप कोई और बोर्ड कर रहे हो, बिकॉज AQ के लिए तो पंजाब बोर्ड के बुक्स करने होते हैं, तो आई थिंक सिलेबस सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. So the paper is completely different for AQ and MDCAT. MDCAT में मेजर फोकस आपका बायोलॉजी पे होता है, तो आपकी जो जब आप पढ़ रहे होगे तो आप अपना मेन फोकस भी बायो पे ही रखोगे, क्योंकि दैट्स 45% ऑफ द पेपर विच इज ऑलमोस्ट 50%. एंड उससे कम फिर केमिस्ट्री होता है, एंड देन फिजिक्स एंड इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी लेस. So you just like give importance based on that. But the AQ format has changed, and AQ ka paper is basically divided into 2 parts. There's a science achievement part and a science reasoning and math reasoning part. Science achievement part में आपके physics के हम bio के MCQs होंगे, आपको नहीं पता कि कितने किसके होंगे, कितना percentage होगा ऑफ ईच, तो आपको अपना पूरा सिलेबस प्रॉपरली करना है. और आपको ये दोनों सेक्शंस MDCAT में नहीं, लेकिन AQ में आपको अपने दोनों सेक्शंस इंडिविजुअली पास करने हैं. वो आपको थ्रेशोल्ड देते हैं, और उस हिसाब से आपको आगे आपके स्टेप 2 में होगा. इफ यू पास द साइंस अचीवमेंट पार्ट एंड द रीजनिंग पार्ट अलग अलग, even if you pass one and you are not able to meet the threshold of science reasoning, even though you've passed science achievement, you will not be able to clear the next one. So you're going to have to pay equal attention to both of them, because in my year one of the main reasons why a lot of people were not able to pass their test was because they didn't pay attention to the science and math reasoning section, और उस वजह से उनका रह गया, even though they scored even more than me in the science achievement section. So MDCAT में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है.
लेकिन AQ के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग साइंस अचीवमेंट सेक्शन की होती है, 0.25 डिडक्ट होता है। मतलब कि अगर आप अपने 4 सवाल गलत करोगे, आपके 5 मार्क कटेंगे, एंड दैट रियली एड्स अप आगे जाके। सो दैट्स व्हाई AQ के जब आप अपना पेपर दोगे, यू नॉट सपोज टू अटेम्प्ट द होल पेपर। इट्स बेटर कि अगर आप किसी चीज़ के लिए अनश्योर हो और आपको लगता है कि अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आपका लाइक मार्क बच जाएगा, यू जस्ट डू दैट इंस्टेड ऑफ आंसरिंग इट कि शायद मेरा 1 in 4 चांस लग जाए। लेकिन साइंस एंड मैथ रीजनिंग सेक्शन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उसमें लाइक दैट्स सजेस्टेड कि आप वो तो अपना पूरा अटेम्प्ट करके, और इवन MD कैट वाला यू आर नॉट सपोज टू लीव एनीथिंग बिकॉज उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सो इट्स बेटर टू ट्राई योर लक। So MDCAT में 70% of the paper is recall and 20% is conceptual questions like definitions, facts, and problems. But in the AQ paper, most of it is just conceptual question based, in which they're going to ask you to put in formulas, and they're going to give you diagrams, and they're going to ask you to analyze stuff from the questions, and it's going to be more scenario based compared to MDCAT. तो इसमें बस अगर आप अपना सिलेबस एक बार कर लो, आपको समझ आना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, because they might not just ask what's in the syllabus, they might just take the syllabus थोड़ा सा और उसके रेफरेंस में आपको सवाल देंगे, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है हमारे लिए। So that's something that we need to practice, and the only way you can practice this is if you're doing a lot of past papers. So one thing in MCQs is that they have a lot of distractions in their choices, and they do this because to trick you, and because you're in such a stressful situation at the time, वो आराम से आपको like realize नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो. So one thing is that some MCQs sound very similar, लेकिन वो different होते हैं, and the way you actually go over these MCQs is you have to like read like the entire paper, you're supposed to read very properly. मतलब कि आप बस थोड़ा सा like जल्दी जल्दी में सवाल ना पढ़ो। मेरी बहुत बुरी आदत थी like जब मैं अपने स्कूल के पेपर्स पढ़ती थी कि मैं बहुत जल्दी जल्दी सवाल पढ़ती थी, and I didn't pay attention that much, and due to that I used to lose a lot of marks. So one thing that was really important for me when I started studying for MCQs was कि मैं सवाल को प्रॉपर ध्यान दूं, पूरा पढूं, and then I move on to the answers and not just quickly. Oh, because you know sometimes होता है कि आप देखो and you're just like हाँ बस यही होगा, and then you move on, and because of that you lose marks. So one example of this is this question. So is the questions, unlike the misleading television documentary, the biography written about Audrey Hepburn was. So the thing is, all of these answers might seem correct, but if you sit down and you're like actually doing the question, or आप properly पढ़ोगे, तो like the starting says unlike the misleading television documentary, और उस so that means that this question is basically asking us कि हम misleading का opposite करें. So that means that the television documentary was inaccurate, so the biography needs to be accurate. And उसके अलावा like अगर आप देखो तो interesting could also be the thing, but they're saying misleading. They never said that the television documentary was uninteresting. And ऐसे this is like one of the ways they trick you, and they do this a lot in the AQ paper, especially in the science reasoning section. Like आपको लगेगा कि कुछ है, all the answers will be correct, but compared to the question only one will be correct, because वो realize नहीं होता कि क्या पूछ रहे हैं. So sometimes the answers are half correct. कि like आप अपना like आप question पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप जब answers पढ़ोगे ना, so you will read the first part of the first question or like the first MCQ option, and you will be like okay हाँ ये तो सही है, और आप आगे पढ़ोगे नहीं, और उसकी वजह से आपका गलत हो जाएगा. So the way to avoid this is कि read all the options really properly, use like your pencil to highlight stuff, and just recheck your questions properly. Like go like make sure you have time in the end to go over the questions, because questions like this that are unsure and more than one answer seems correct, they're most likely trying to trick you. And the best way to do it is कि आप end में इन पे वापस आओ जब आपका like पूरा पेपर हो जाता है, so then you think of this with an open mind, because you do have time. Because normally जब आप कर रहे होते हो पूरा पेपर के साथ और एक tricky question आता है, your brain just stops working and you're stressed because you have so much of the paper left in front of you कि आप उस पे ध्यान नहीं दे सकते हैं. So what I used to do was these questions, the ones that were slightly tricky, I left them, और मैंने आखिरी 30 minutes पे आके सारे solve किए थे, and that way I was pretty calm, because I was just like मेरा बाकी पेपर तो हो गया, तो इस पे मैं आराम से अगर 5-5 6-6 मिनट पर क्वेश्चन भी लगा रही हूँ तो कोई बात नहीं.
So if you look at this, you read the options, and you can. I'm gonna go again, and then I'll go back again, so you guys can read this, and then we'll go over why each option is correct or wrong. Okay, so option A is the queen knew her hair was more beautiful than the queen's jewels. Option A is incorrect because it implies a comparison between the queen's hair and her own jewels. Option B is the queen knew her hair was more beautiful than other queen's jewels. This answer is also incorrect due to grammatical errors and illogical comparison. It should be other queens instead of queen. See, like it's like the tiniest mistakes in the punctuation that are gonna mislead you aage. Option C, option D is the queen knew her hair was more beautiful than any queen's jewels. This option is incorrect because it implies that the queen's hair is more beautiful than the jewels of any queen, including herself, which doesn't make sense in this context. But if you read question C, the queen knew her hair was more beautiful than any other queen's jewels. This option is grammatically correct and logically correct, and it sounds correct too. It implies that the queen's hair is more beautiful than the jewels of any other queen. So एक तरह के questions ऐसे होते हैं कि they give you random answers, like random options in the MCQs which have nothing to do with the actual answer, but they're not per se wrong. So they're not really wrong, but they don't make sense compared to the question that's given. So the way to go over these is you need to be very careful when you're answering these questions, and you need to be, I'm sorry, you need to be extremely careful when you're answering these questions, and you should do these questions by elimination. And you need to recall the concept, and you need to see exactly what they're asking in the question. Just say, if you look at this question, the boiling point of water is higher than that of hydrogen fluoride because. So if you look at all these answers, they're all correct because boiling point किसी चीज का इन सब चीजों की वजह से ही ज्यादा होता है. But the difference in water and hydrogen fluoride is that hydrogen fluoride सिर्फ एक hydrogen bond बनाता है, but water ज्यादा बनाता है. That's why the answer will be B and not any of the other answers. So many statements of the questions are condition based, and basically what you do is, because you're doing it in a hurry, you don't really read the questions properly. That's what I've been trying to say, because that is something that I struggle with genuinely the most. That time crunch hota hai, I think 2 घंटे होते हैं क्यू में, and you have to do 100 MCQs, and it's so stressful that you're just trying to get through the paper as quickly as possible. But ये करते करते ना आप realize नहीं करते हो कि आपके बहुत सारे सवाल इसीलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो. So I'd say just like keep time, like time is important, but also don't try to rush through the paper. You're supposed to read the question carefully. I'd say take a pencil with you. I think they provide a pencil, but just highlight the important things in the start and just make sure that you're recalling information and everything. Like you sit down, you actually think of what you've studied because आपने सारा पढ़ाई की भी है, सब कुछ आपके दिमाग के अंदर ही है. तो आप बैठो अपने पेपर में आराम से बैठो क्योंकि टाइम आपके पास होता है. they've given enough time कि आप अपना पेपर कंप्लीट कर सको. And trust me, like AQ का पेपर, most of like the people I know, they finish 30 minutes before, so after 30 minutes होते हैं. Even MD-CAT का पेपर में आपके पास आराम से एंड में 1 घंटा होता है. So if you're rushing through the paper, you're gonna have, okay, आपके पास 30 से 40 minutes extra हो गए, लेकिन आप उसमें क्या करोगे? Because आप जब अपने बाकी रीचेक पे वापस आओगे, you'll realize that you've made a lot of mistakes because you rushed through the paper. So it's better to just, when you're doing the paper for the first time, just do it आराम से, do it properly, कि आप अपना टाइम साथ साथ ध्यान रख रहे हो, but आप rush नहीं कर रहे हो कुछ. And that's how you're gonna not miss these questions. Also, if there's hard questions, because the paper is divided in a way that there are a few easy questions, most of them are moderate level और थोड़े बहुत मुश्किल होते हैं. And MDCAT and AQ दोनों में they waste a lot of time because आप बैठे होते हो. I still remember there was this one question which was out of syllabus, and मैं बैठी हुई उस पर trying to recall something that I never even studied because it was out of syllabus, but I was just like AQ में 50 तो होते, मैं छोड़ तो नहीं सकती हूँ. मैंने उसमें कोई 10 मिनट जाया किए थे और उसके बाद भी मुझसे सवाल नहीं हुआ था because वो out of syllabus था.
वो लाइक वो कहीं नहीं लिखा हुआ था, वो किसी और बुक में लिखा हुआ था जो मैंने नहीं किया था. सो द वे यू आर सपोज टू टैकल दीज क्वेश्चंस इज के जस्ट put a tick mark on it and move on. एंड में जब टाइम होगा आपके पास, आप इस पे वापस आओ and just do it then. If it's an AQ question, if you are not like 70% sure of it and आपने और सवाल छोड़े हुए हैं, तो आप इसको भी छोड़ दो. बिकॉज अगर आपको पता है कि आपके काफी गलत हुए हैं जो आपने सवाल लाइक किए हैं, तो फिर आप इसको गेस नहीं कर सकते, बिकॉज फिर आपका इसका भी 0.25 कट जाएगा एंड देन व्हेन यू क्यूमुलेट इट एड्स अप टू अ लॉट. एंड AQ के टेस्ट में 0.1% से भी आपका स्टेप 2 का फॉर्म रह जाता है. सो इट्स बेटर टू लीव क्वेश्चंस. आई नो पीपल हु लेफ्ट 7-8 questions. I left 3-4. I left I think 4 in the science reasoning section, but I know people who left 7 and they got a better score than me in the science reasoning section because उन्होंने सवाल छोड़ दिए थे and I attempted them because I was just like maybe मेरा सही हो जाए. और उस maybe के चक्कर में मेरा जो percentage आया था AQ के उसमें वो काफी low आया था क्योंकि मैंने छोड़े नहीं थे सवाल like I was told to do because I was really scared कि मेरे फिर शायद कुछ भी ना हो. Another thing is that a lot of people overlook the instructions and they don't read it properly and they don't see the scoring system. Like for AQ, अगर आप नहीं पढ़ोगे कि आपके उसमें negative marking होती है, but सिर्फ एक section में होती है, then you might be leaving questions in the math section, लेकिन उसमें आपने फालतू में अपने marks ज़ाया किए. So when they give you your instruction sheet, you should read that very properly, understand it. If you don't understand the instructions on the paper, आप किसी से पूछ लो उधर, वो आपको जवाब दे देंगे. And English में synonyms and antonyms, वो आपको पूछते हैं and you just can't read them properly because they both look the same and then you mark the wrong answer. तो आप प्लीज इंस्ट्रक्शंस अपने बहुत क्लियरली पढ़िएगा, मेन क्वेश्चन पेपर के भी और ईच क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहे हैं उसके भी. So the thing is कि AQ के पेपर में and even MDCAT में time pressure is a really big thing. That's what I've been also talking about. So the only way that you're gonna get good at this is if you are practicing अभी से, because AQ के लिए अभी आपके पास I think 1 month से थोड़ा ज़्यादा है and MDCAT के लिए आपके पास अच्छा खासा time है. So the amount of like long full length papers that you will practice will actually benefit you in the long run. I know, like last year, Pre-Med had this practice test series in the last month for AQ. I did that and they had mocks, I think almost every day or every other day. I'm not really sure, but please check out the page closer to the date because they have like full courses and they also like put a lot of free stuff on the Pre-Med page कि आप ये वाले mocks attempt कर लो. तो उससे बहुत फायदा होता है because आप अपना टाइम ड्यूरेशन जैसे पेपर कर रहे हो वो आप अपना एनालाइज कर सकते हो, देन यू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. ऑल्सो समथिंग दैट आई सजेस्ट इज जब आप फुल लेंथ पेपर्स कर रहे हो, डोंट डू इट इन द सेम सेटिंग दैट यू आर स्टडीइंग. डू इट इन अ डिफरेंट सेटिंग. लाइक अगर आप अपने कमरे में पढ़ते हो तो आप शायद टीवी लाउंज में जाके लाइक या कोई क्वाइट प्लेस में जाके कर लो, या अगर आपके करीब कोई लाइब्रेरी आप वहां जाके कर लो, सो दैट यू एक्चुअली स्लाइटली मिमिकिंग एग्जाम का scenario and the place where it's getting done, because उस वक्त it's not the same as if you're doing the papers in bed. वो काफी difference होता है और आपको realize नहीं होता है, लेकिन जब paper में actually जाके बैठोगे तो वो काफी different होगा. So if you're like trying to mimic this scenario पहले से, it will be quite beneficial for you. And if you start practicing papers for MDCAT like from July, by the time the MDCAT happens in September, you will be quite well prepared for it. और आपका time भी आप देखोगे significantly the amount of time that it takes you to finish the paper decreases every time. Okay, so there's some preparation setbacks that I'd like to go through now. So yeah, one thing is that many coaching centers provide extremely long notes that you really don't need. You don't need a lot of material, you don't need extra information. आप अपना syllabus सामने रखो और आप जैसे आपने अपनी पढ़ाई अपने लाइक जिस भी आपने एग्जाम्स दिए हैं अभी तक वैसे किए हैं, आप वैसे
वैसे ही पढ़ते रहो. डोंट चेंज योर स्टडी टेक्निक्स जस्ट फॉर द एमडी कैट एंड AQ प्रिपरेशन. अगर आप राइटिंग रिकॉल से ज्यादा जल्दी पढ़ते हो, आप वैसे पढ़ो. अगर आप अगर आप फ्लैश कार्ड्स बना के अच्छा पढ़ते थे, तो आप फ्लैश कार्ड्स ही बनाओ एमडी कैट वगैरह के लिए. And maybe if you're like taking lectures from some academy, or if you're doing them from pre-med, I know pre-med has the 100 days to med school wala thing that they didn't have last year. They've introduced it this year, so that's also a pretty good thing that you guys could join for MD CAT, because आपकी रिविजन भी हो जाएगी, आपको नोट्स भी देंगे, एंड आपके पेपर्स भी प्रैक्टिस हो जाएंगे. सो इफ यू डूइंग दैट, एंड इफ यू लाइक गोइंग थ्रू एनी रिकॉर्डिंग्स, तो आप उसमें अपने मिनी नोट्स बना लो लेक्चर्स में. इफ दैट्स व्हाट हेल्प्स यू study more. You don't need to study extensive content to get really good grades. आपको बस पता होना चाहिए कि जो सिलेबस में है वो आपको प्रॉपरली आ रहा है. एंड आई कांट एम्फसाइज दिस इनफ, बट गो ओवर योर प्रोविजनल टेक्स्ट बुक. अगर आप सिंध का पेपर दे रहे हो, आपकी सिंध की सारी टेक्स्ट बुक्स आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. अगर आप अपना AQ का पेपर दे रहे हो, आपको पंजाब टेक्स्ट बुक में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको आनी चाहिए. और जैसे लाइक इफ यू डूइंग फेडरल, फिर आपको फेडरल की टेक्स्ट बुक्स आनी चाहिए. बट फॉर AQ, द पंजाब टेक्स्ट बुक्स are what I would recommend, and what's basically most of their papers based on. But for chemistry, I would say that the chemistry Punjab textbook is quite a lot, and chemistry में आपका federal से mostly हो जाएगा काम. But then again, you still need to go over the provisional textbooks for the MD CAT and AQ respectively. And yeah, also don't just do it from different notes, because मुझे पता है कि like बहुत ट्यूशन सेंटर्स वगैरह होते हैं, सबके पास अपने अपने नोट्स होते हैं, वो आपके पास आ जाते हैं कई तरह. और अगर आप बोलोगे कि मैंने हर जगह से पढ़ना है, कि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, that's actually gonna be against you. एंड उससे उससे होगा क्या कि आपका जो आपको कंटेंट आ रहा होगा ना, वो भी आपका रह जाएगा. बिकॉज इवन दो इट्स द सेम कंटेंट, एवरी प्लेस हैज इट रिटन स्लाइटली डिफरेंटली. थोड़े में कम होगा, थोड़े में ज्यादा होगा, एंड इट्स गोना टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम टू कैच अप ऑन दैट स्टफ. और उससे क्या होगा कि आपका एक तो सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज आप मल्टीपल रिसोर्सेज से कर रहे होगे, और सेकेंडली आप बस कंफ्यूज होगे. सो आई से कि अभी भी टाइम है. लाइक जस्ट पिक द रिसोर्सेज दैट वर्क फॉर यू, व्हाटएवर इट इज. इफ इट्स द टेक्स्ट बुक्स, इट्स द टेक्स्ट बुक्स. इफ इट्स ऑनलाइन लेक्चर्स, इट्स ऑनलाइन लेक्चर्स. इफ इट्स दोज यूट्यूब लेक्चर्स, वो यूट्यूब लेक्चर्स आप करें. If it's pre-med notes, it's pre-med notes. But whatever it is, you pick one thing and you just go along with them. Also one thing is कि मैं suggest करूँगी कि आप लोग साथ में ना अपने notes बना लें, क्योंकि वो लास्ट डे में आपको रिवीजन में बहुत काम आएंगे. That's one of the mistakes I made for AQ, that I didn't make revision notes while I was doing the syllabus. And in the end, the only way that I could revise was I would either go over someone else's revision notes, or I had to go over the entire textbook. So that was something that I did wrong, and I do regret, and I fixed it for MD CAT, because MD CAT के वक्त पे मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ों के फिर मिनी नोट्स बनाए थे, जो मुझे आखिरी दिन रिविजन में बहुत काम आए थे. बिकॉज यू कांट रिवाइज ऑल द टेक्स्ट बुक्स इन वन डे, इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल. लेकिन आप चाहोगे कि बिफोर द पेपर यू कैन गेट ओवर एज मच एज यू कैन. Okay, also like you can read the notes and textbooks and it's okay, but the only way you'll be able to score really well and get good grades and get into the unis that you want to is if you're practicing questions and actually quizzing yourself, because that way you can actually assess what you know and what you don't know and what you have to go back to. बिकॉज अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ोगे, आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि आप कौन से जगहों में लैग कर रहे हो, और आपको कौन से टॉपिक्स ज्यादा सही तरह पढ़ने चाहिए और कौन से टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ने चाहिए. ओके, सो one thing is that for AQ and MDCAT, cramming will not work. It'll just increase your stress, and जो आपको आता होगा ना, वो भी आपका रह जाएगा. तो अभी भी आपके पास टाइम है. अगर आपने नहीं बनाया है, आप प्रॉपर अपना स्केड्यूल बनाए, सारी स्केड्यूल अभी से लेके AQ के एग्जाम तक, अभी से लेके MDCAT के एग्जाम तक, और उसको प्रॉपरली लाइक फिल करें. एंड बिल्कुल एक कोई रफ सा नहीं होना चाहिए. लाइक प्रॉपर आप अपना स्टडी स्केड्यूल करें कि अगर आप अभी से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, आपका AQ के पेपर से 1-2 हफ्ते पहले आपका सिलेबस खत्म हो, और फिर उसके जो आखिरी 2 हफ्ते हैं उसमें आप रिविजन कर रहे हो और आप अपने पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हो. ऑल्सो यू नीड टू practice questions daily, not just the stuff that you're doing, but also a lot of other stuff. क्योंकि अगर आप एक ही सवाल एक ही टॉपिक एक दिन में कर रहे हैं, फिर आपने उसी दिन उसके प्रैक्टिस किए, एंड देन यू जस्ट लीव इट फॉर 2 weeks, जब आप उस पर वापस आओगे
तब आपको उसका कुछ भी याद नहीं होगा. सो व्हेन यू आर मेकिंग अ स्केड्यूल, आपको ये नहीं देखना कि आपका कंटेंट कवर हो रहा है या नहीं, आपको ये भी देखना है कि आप कितनी रिविजन कर पा रहे हो उस चीज़ की, आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पा रहे हो. ऑल्सो फिजिक्स के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फॉर्मूला शीट है, बिकॉज आपको कोई फॉर्मूलाज कुछ भी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं इन द AQ पेपर एंड इन द MD कैट. तो आपको अपनी फॉर्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, एंड द ओनली वे टू डू दैट इज टू रिवाइज द formulas. And the same thing with organic chemistry ke equations. You need to go over organic chemistry as many times as you can because that's highly tested. And that's also really hard because all of the reactions are very similar to each other. और वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा. Also, something that a lot of people do is they focus on one subject that they're good at, especially ये MD कैट में होता है कि आपको बायो आप अपनी बिल्कुल बेटर करते हैं और उसमें आपकी फिजिक्स रह जाती है और आपकी केमिस्ट्री रह जाती है. एंड दैट वे लाइक ओके फाइन, आप बायो में 100% भी स्कोर करेंगे, बट अगर आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छा नहीं होगा, आपका ओवरऑल जो MD कैट का स्कोर है वो अच्छा नहीं बनेगा, and you won't be able to get the score you want to get into the universities. And this is something also I struggled with. मुझे फिजिक्स बिल्कुल भी सही नहीं आती थी, एंड फॉर AQ मैंने अपना स्टार्टिंग में बायो खत्म कर दिया था, केम खत्म कर दिया था, बट फिजिक्स आई डिड इन द एंड because I just never wanted to do it. I was really bad at it, तो मैंने बस उसको छोड़ दिया था. But because of that, I really rushed through physics. So one thing that you need to not do is give more, like okay yeah, give more time to bio for MDCAT, but आप अपने physics और chemistry छोड़ नहीं सकते हो. And like while you're studying and doing your mocks, you need to identify your strengths and your weaknesses, and you need to spend more time in your weaker areas. MDCAT के लिए मैंने physics को बायो और केमिस्ट्री से ज़्यादा टाइम दिया था, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ था कि मेरी फिजिक्स बिल्कुल सही नहीं है और मेरा मैथ भी इतना अच्छा नहीं था. सो आई हैड टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन physics compared to the other things. So the only way you'll know this is if you're practicing well and if you're doing mocks and you're actually analyzing and you're learning from your mocks, and you're not just doing mocks for the sake of doing mocks कि आप एक mock कर रहे हो फिर एक और mock कर रहे हो और एक और mock कर रहे हो. आपको एक mock करना है, फिर आपको उसमें देखना है कि आपने क्या गलत किया है और आप फिर उस पर वर्क ज़्यादा करोगे, और फिर जब आप दोबारा नेक्स्ट मॉक करोगे यू नीड टू मेक श्योर दैट जो गलतियां आप पहले कर रहे हो वो आप आगे ना करो, बिकॉज दैट्स द वे यू गोना लर्न. और वैसे ही अपवर्ड लर्निंग कर्व होगा. पढ़ना आप जितना भी पढ़ लो, अगर आप अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं दे रहे हो देन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. Okay, so one more thing is कि ignoring past papers is just not an option, because the thing is कि the question like the syllabus is very vast, especially अगर आपने syllabus कभी पहले नहीं किया हुआ तो आपके लिए काफी मुश्किल होगा और आपको ये भी नहीं पता कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे MD कैट और AQ में. And the only way to actually know that is if you're going through as many past papers as possible from every resource possible. I know pre-med has almost every past paper compiled very properly with the correct answer scheme, so that's a very good place. But even if you find other papers that aren't on pre-med, you just do them, and the more papers you do, the more confident you'll also feel, and the more you'll know the way the paper works, and फिर आप ना stress कम होगे पेपर में जाने से पहले. Okay, yeah. So another thing is that you should make a journal, like you should just have a notebook with you. आप उसको separately रखें और जब भी आप कोई पेपर कर रहे हैं उसमें जो जो चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं आप उसको उसमें नोट कर दें. So by the end of your studying, जब आप अपने रिविजन वाले 1-2 वीक्स पे आओगे, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो कि आपकी जो जो मिस्टेक्स हुई थी और आपने क्या आपको क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है. अगर आप ये नहीं करोगे just because you're scared कि ओ मेरी इतनी चीजें गलत हो रही हैं और अब like मुझसे क्या होगा, like that's not the point of this. The only point of like a revision journal or like a mistake journal is to make sure that you don't make the mistakes in the actual exam, because अभी तो आप सिर्फ practice कर रहे हो. It doesn't matter how many things you get wrong or not, as long as you're gonna work on it and you're not gonna make the error in your final paper, it's completely fine no matter how many mistakes you make. Because like to be completely honest, अगर आप अभी गलतियां करोगे ना और उनको like देख लोगे कि आपने गलती की है, आप असल पेपर में वो गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे.
Okay, so the true measure is impact over volume, whether it's about practice, amount of notes you've studied, or lectures you've taken, or number of revisions. Regular reviews, it's what's going to help you. It doesn't matter कि आपने कितना जल्दी syllabus कर लिया था या आपने कितने notes कर लिए थे या कितनी जगह से notes कर लिए थे. आपको जो आपने पढ़ा है आपको कितना अच्छा आता है और आपने कितनी बार पढ़ा है उसको और कितना आपके दिमाग में रिटेन हुआ है. ये भी नहीं कि आपने 5 बार पढ़ लिया है लेकिन आपके दिमाग में कुछ रिटेन नहीं हुआ है, उससे कोई आपको फायदा नहीं होगा. सो व्हाट आई सजेस्ट इज एंड व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक बार अपना सिलेबस किया था, बट देन उसके बाद आई ट्राई डूइंग माय सिलेबस अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड एवरी टाइम आई सी कि मेरा रिकॉल कितना बेहतर हुआ है. और ये मेरा चेक मार्क था कि हर बार मुझे पिछली बार से थोड़ी ज्यादा चीजें आनी चाहिए थी. Because if I'm not improving, then what's the point of me going over the syllabus over and over again? Because फिर वो मैं retain नहीं कर रही हूँ उसको, मैं बस read कर रही हूँ and the paper reading isn't gonna help in MCQs. So yeah, also quality does matter over quantity. So if you've done your syllabus twice but you've done it so properly कि आपको almost सब कुछ आता है, it's better than someone who's done their syllabus 5 times but they just know the main points that are in the syllabus, like they just know pointers, because उससे आपका कुछ नहीं होगा. Also you need to practice from good resources. Please don't miss out on this. And also आप जब अपनी practice कर रहे हो, आप जो MD-CAT की आपको books मिलती है ना जिसमें papers होते हैं उसमें answer keys mostly wrong होती हैं, तो please आप देख लें कि जहाँ से आप practice कर रहे हैं आप reliable जगह से practice कर रहे हैं कि आप जो answers आप देख रहे हैं कि ये आंसर सही है वो actually सही है और वो गलत ना हो. तो yeah, so I would suggest doing them from pre-med because a lot of people have checked them and you know that the answer that you're doing is correct, and if there's something wrong they even have a feature कि आप जाके उनको बता दो कि ये गलत है and then they'll change it for everyone else. So you select relevant textbooks and you do the online tests and sessions regarding the topic which seems tough. आपको अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो आप बस YouTube पे जाके उस टॉपिक को सर्च करें and just write MD-CAT, Sindh और AQ और आपको बहुत वीडियोस मिलेंगी and trust me they're all extremely helpful. I remember when I was studying I did some topics from the randomest things from like yeah, randomest YouTube pages that I'd never heard of, but उन्हीं पे वो topic था तो मैंने कर लिया था and they were really helpful. Okay, so there are a lot of psychological roadblocks as well that we'll go over. One of the main things is falling apart under stress. So when you're stressed out, because this is a very important thing और आपकी basically future depend होता है और आपका family pressure भी बहुत होता है आपके ऊपर, लेकिन उससे होता क्या है कि अगर आप ज़्यादा stress ले लोगे आपका नहीं होगा सही पेपर. And I struggled with this a lot myself too, that I took a lot of stress, but I realized that every time जब मैं stress ले रही थी मेरी पढ़ाई उन दिनों में बिल्कुल भी नहीं हो रही थी. So you just need to like practice relaxation techniques, whatever works for you. अगर आपको लगता है कि आप कोई अपनी एक्टिविटी साथ साथ करो एमडी कैट प्रिपरेशन के साथ, दैट विल हेल्प यू जस्ट नॉट गो completely stressed like completely stressed, that's completely fine. Like you don't need to be studying the entire day. अगर आप 1 घंटा निकाल रहे हो जाके कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, 1 घंटा निकाल रहे हो जाके वॉक करने के लिए पार्क में, because that'll help you calm down, do that. Because if you're just studying all the time and you're just building up the stress, the anxiety in the end will be not good for you और आपके अगेंस्ट काम करेगा वो आपके पेपर में. आपने अगर इतनी मेहनत की है तो वो आगे जाके सारी मेहनत चली जाएगी. तो आप बस देखें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं it's fine, but also keep something, like at least one thing, even if it's not getting out of the house. आप घर में अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं जैसे पेंटिंग या anything, just keep doing that and don't let go. Like obviously आप पूरा वक्त तो नहीं कर सकते हैं, but आप थोड़ा टाइम दिन में या वीक में allocate करें that you're not studying and you're not just not doing anything, you're actually doing something productive and like stress free. Also, when you're giving the paper, start from the section that's easiest for you. For example, मेरा strongest bio था तो मैंने MD-CAT का bio पहले किया था, फिर physics किया, फिर chemistry किया था, फिर science reasoning, फिर like logical reasoning और English किया था, फिर आके physics किया था. अगर आपका physics वाला section ज़्यादा बेहतर है तो आप physics से start करो. Also, keep yourself hydrated. Please अपना खाना सही रखें. Like keep yourself hydrated because if you're getting sick,
then आपकी पढ़ाई affect होगी. So yeah, and especially because आजकल it's really hot as well. So if you're not keeping yourself hydrated, it will make you not feel good, and then आपकी पढ़ाई और delay होगी. And one thing that a lot of people think is कि studying for long hours without break is sufficient and it's good और वो अच्छा है. But in reality, अगर आप 45 to 50 minutes पढ़ रहे हो and then you take like a 20-minute break and then you're studying again 45-50 minutes, it's going to help you retain information better और आप थकोगे भी नहीं. और अगर आप ये करोगे, आप realize करोगे in the long run that you're studying more than if you're studying like 3 hours, because 3 घंटों के बाद आप बहुत थक जाओगे and the chances are you're going to take an even longer break and you're going to take a break for 3 more hours instead of studying. So yeah, so I would say कि please um take breaks while studying. Don't study for like 7-8 hours consistently because the chances are you're going to burn out और फिर आप आगे दोबारा नहीं पढ़ पाओगे. Also, please don't indulge in cheating at all. Like, don't have that thing in the back of your mind कि ओ अच्छा अगर नहीं हुआ मैं एमडी कैट में या AQ में किसी का देख लूंगा. एक तो बहुत मुश्किल होता है वो करना. They give papers अलग से. Like they give papers सबके like formats बिल्कुल different होते हैं. और AQ में तो आप कर ही नहीं सकते कुछ हॉल इतना छोटा होता है, लेकिन इतने ज्यादा लोग नहीं होते एंड देर वेरी विजिलेंट. और आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी अगर आप चीटिंग करें और आप पकड़े गए, बिकॉज आप पकड़े जाओगे. सो डोंट डू दैट. ऑल्सो बी ऑनेस्ट विद योर पेरेंट्स अबाउट योर स्कोर्स. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. अगर आप पेपर कर रहे हो लाइक घर पे और चेक कर रहे हो, आप properly check karo, because the thing is that these practice papers are meant just for you and just to be better. Also, ask as many questions as you can. If you have someone who did the AQ paper before, the MDCAT paper before, or like a teacher or a mentor, anyone, आप उनसे जितने सवाल चाहो पूछो, because that's what's gonna help you get better and make your concept stronger. Also, please आप अपनी health को neglect ना करिएगा while doing so, because that is extremely important and that makes a huge difference in how you're gonna perform on the day. If you're neglecting your sleep and if you've slept like 2 hours before the AQ paper, आप जब पेपर में जाओगे आप इतने थके हुए होगे और वो आपको इतना वेट कराते हैं. इवन एमडी कैट में आप जाओगे सुबह 9 बजे, आपका पेपर शुरू होगा कोई 12 बजे, और उस टाइम में आप इतने थक जाओगे कि आपका पेपर सही नहीं होगा. If you're not eating well, if you're not eating well or drinking water, you're not going to be able to perform your best, and all of the मेहनत जो आप पिछले 1-2 महीनों से कर रहे हो वो ज़ाया हो जाएगी. So अपना खाना पीना सही रखें. आप देखें आपकी तबीयत अगर खराब हो रही है, take a break day. It's not the end of the world, but if you don't do that, it's gonna end up really bad. For me, I didn't take a break, and the day before the AQ paper, I had a high fever, like 100 मेरा fever था, and I had a nebulizer stuck to me because I couldn't breathe properly, and I was extremely like my cough was really bad, and I was really scared if I could even go and give the paper the next day. And that was literally because I neglected everything. I was having extremely cold drinks, I was having energy drinks to stay up at night, and I was not eating proper food, which led to me being so sick that on the last day I was not able to study anything. And I was extremely scared because last day people were studying a lot, they were going over formulas, like I was just trying to get better. So to avoid that, आप please अपने सेहत का ख्याल रखें अभी से, and don't succumb into people's pressures कि ओ आप पेपर से पहले बिल्कुल भी ना सो, because someone did that. People study differently, but majority का वो होता है कि like even if for your board exams या CI exams आप बिना नींद के दे दो, but these papers you cannot give because the time duration that you're there is extremely long. Also, for the AQ paper, please take something to eat with you because they don't say no, and it will actually just give you a little energy boost in the middle. Like take a chocolate with you or take something, because I think पानी में provide करते हैं लेकिन खाना provide नहीं करते हैं, तो आप please ले जाइएगा because it takes a lot of time to go there and then leave, so खाना will help you. Also, one thing that's different is कि physics without the calculator, because हमें इतनी आदत होती है math या सब कुछ करने की calculator के साथ कि this is a very daunting experience.
So the way I went through this was that I learned all the square roots till 20, and I learned all the squares of the numbers till 20, and a lot of little tricks that you do while you're studying. So the more practice you do without a calculator, like the more physics questions you'll solve, like the numerical ones without calculator, आपका उतना ही बेहतर हो जाएगा. और एमडी कैट में मोस्ट प्रोबेबली जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपका बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन देंगे आपको. और जो आपके प्रोविंशियल बुक्स में है, फॉर एग्जांपल अगर आपका पंजाब वाला है, पंजाब की बुक में जो एग्जांपल्स हैं वेरी लाइकली कि बहुत सिमिलर आपका एमडी कैट में आएगा. तो आप प्लीज कोई एग्जांपल्स मिस ना करें एंड रिव्यू द formulas as much as possible. And there are a lot of constants in physics, so however many you can, like the most important ones, आप उनको याद करें and just go over them as many times as possible. Even if you don't think you remember them, आपको in the paper, if the option is one of those, it'll click. So just read the formula sheet as many times as you can. Also, thinking a lot can also paralyze you. You need to break down your study material into manageable chunks, and when you're making a study schedule, make sure कि आप extra अपने plate पे नहीं डाल रहे हैं. Just do as much as you think you can. The pre-med 100 days वाला जो course है for MDCAT, that's a very nice course because we have 100 days right now. Or I think a little more, I'm not really sure. बट उसमें आपका बिल्कुल एक प्रॉपर स्केड्यूल से आप जाओगे. इफ दैट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू, मेक योर ओन स्केड्यूल, बट मेक इट वेरी रियलिस्टिक. ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिन में 5 चैप्टर्स कर रहे हो और फिर उसके बाद पांचों के रिविजन, पांचों के एमसीक्यूज भी कर रहे हो, फिर एक ईयरली पेपर भी कर रहे हो. दैट्स समथिंग दैट्स नॉट रियलिस्टिक एट ऑल. तो please don't do that. Also, in this process, don't compare yourself to others. Don't compare yourself to the people who ask questions on these MDCAT groups. Sabka padhai is different, and everyone studies differently. Everyone has different study methods, and comparing yourself and getting stressed out कि ये बंदा मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है, आपके ही harm में करेगा फिर उसको. Because उससे होगा क्या कि आप स्ट्रेस करोगे कि वो क्या पढ़ रहा है और मैं नहीं पढ़ रहा, एंड यू डोंट नो व्हाट दैट पर्सन स्टडिंग और हाउ दैट पर्सन स्टडिंग, एंड यू गोना वेस्ट टाइम दैट you could have studied. So please don't do that. I would suggest that even if like you discuss stuff with your friends, but don't compare yourself to them. And also, if you're like doing something nice and if you're doing something really well and you're getting good grades, don't just be like, don't just let it go. If you gave a mock and you got a good grade, celebrate it. But at the same time, you don't need to shove it in other people's faces कि अगर आप ट्यूशन सेंटर वगैरह पे हो कि मेरे आपसे ज्यादा मार्क्स आए, कि सबका लर्निंग जर्नी अलग होता है, and you don't know how much harm that's going to cause the other person. And for the last day, you need to get your sleep. और आखिरी दिन ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपका बस ब्रेन ज्यादा सैचुरेट होगा. तो आप सुबह उठें, study for a few hours, and then after that sleep by 10 maximum so that you can wake up by 6. आप अपना नाश्ता वगैरह करें और फिर पेपर जाएं. And last day, instead of going over huge textbooks, you could go through short listings. I know I went through pre-med ke short listings that they have, like, and they have like the mnemonics and one-page revision sheets. Go over that, but don't do anything you haven't done before. Ideally आपका लास्ट डे कोई कंटेंट नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर रह गया आप उसको लास्ट डे याद करने की कोशिश ना करें. जो जो आपने पढ़ा है आप उसी को देखें कि आपका वो बेहतर हो गया है. दैट वे जो आपको आता है वो आपका बेहतर होगा. एंड जस्ट इन केस अल्लाह ना करे अगर आपने कुछ छोड़ दिया और वो आ भी गया और वो आपका गलत हो गया, आपने जो किया है उससे आप उसको कवर अप कर लेंगे. एंड प्लीज ईट बिफोर गोइंग बिकॉज इट्स अ रियली लॉन्ग थिंग. हमारा एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो गया था बिकॉज आई रिमेम्बर मैं सुबह 8 बजे एमडी कैट देने गई थी और मैं शाम को 4 बजे वहां से निकली थी. और खाने में इन्होंने सिर्फ बिस्किट्स प्रोवाइड किए थे. तो आप प्लीज खाना प्रॉपर खा के जाइएगा, अपना पानी भी साथ लेके जाएं if possible. And inshallah it'll all go perfect, and pray. And yeah, it will all be well, inshallah. I know this is really hard for you guys and it's a very stressful journey, but it's just the last few months, and then after that it will all be worth it, and inshallah you'll all get into the med schools that you want to. If you guys have any questions, please let me know.
ओके, तो डेली प्रैक्टिस आप ऐसे करें कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने दिन के 3 टॉपिक्स कर रहे हैं, तो आप जब लाइक इफ यू आर स्टडिंग 3 टॉपिक्स और आपने उसके 3 वो कर लिए हैं, तीनों टॉपिक्स के आपने टॉपिकल क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आप 3 ऐसे टॉपिक्स, एक फिजिक्स, एक केम और एक बायो के जो आपने लास्ट वीक किए थे, आप उसके भी कोई 50 टॉपिकल्स ईच कर लें। और उससे अगर आप इसको रोज एक वे में, इफ यू स्केड्यूलिंग इन इट इन अ वे कि आप एक दिन अपने 3 न्यू चैप्टर्स कर रहे हैं और 3 ओल्ड चैप्टर्स कर रहे हैं, तो आप जब 1-2 हफ्तों बाद देखेंगे आपने काफी ज्यादा चैप्टर्स कर भी लिए होंगे और फिर उनको दोबारा रिवाइज भी कर लिया होगा, और वैसे आपकी डेली प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया है, फिर तो आप ईयरली पेपर्स कर लें डेली प्रैक्टिस के लिए। बट अगर आप अपना सिलेबस कर रहे हैं तो फिर टॉपिकल क्वेश्चंस बेस्ट वे है। Ideally, you should finish the entire syllabus for AQ before going to practice questions like yearlies, because आपको नहीं पता वो कहाँ से पूछ लेंगे, स्पेशली कि साइंस में सिर्फ 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 वो किधर से उठा के पूछेंगे आपको नहीं पता। एंड लीविंग एनीथिंग इज अ वेरी बिग गैम्बल, और मैं बिल्कुल उसको सजेस्ट नहीं करती हूँ। बट अगर जुलाई हो जाता है, लाइक जुलाई शुरू हो जाता है और आपके एंडिंग के टॉपिक्स बच गए हैं थोड़े, लाइक वो जो आखिरी के होते हैं बायो और केम के, फिजिक्स यू नीड टू फिनिश द एंटायर सिलेबस बिकॉज देर इज नो चैप्टर दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बट फॉर बायो केम अगर आपके आखिरी लाइक इंडस्ट्रियल केम वगैरह रह जाते हैं जुलाई के बाद, देन आई वुड सजेस्ट जस्ट रीड देम, उनको आप इतने डिटेल में ना करें जितना आपने अपना बाकी सिलेबस किया, और आप प्रैक्टिस पे मूव ऑन कर दें। बट दैट बीइंग सेड, डू द इंटायर सिलेबस एटलीस्ट वंस फ्रॉम समवेयर। अगर वो जो एंडिंग के टॉपिक्स हैं आप एंड में उनको रिवाइज नहीं करना चाह रहे हैं या उनको शॉर्टेड नोट से करना चाह रहे हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, but you still need to do them at least once just in case they come, because they can ask questions from lower yield chapters as well, and they have done that in my year, so that's that. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद भी एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं, तो आप किसी अपने फेलो फ्रेंड से या किसी सीनियर से पूछें कि एग्जैक्ट, और लाइक एनी टीचर, अगर आप किसी के पास जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आप उनसे पूछें एग्जैक्टली व्हाट यू आर गेटिंग रॉन्ग इन इट। बिकॉज अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं और आपका फिर भी सवाल गलत हो रहा है, मे बी यू डेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, या क्वेश्चन मे बी कुछ और पूछ रहा है, या आप उसको फिर, अगर आपके लाइक ऐसे 2-3 सवाल हैं जो आपने कॉन्सेप्ट कर लिया और आपका फिर भी सही नहीं हो रहा है, उसको आप एक डायरी में लिख दें एंड मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चंस, और अपना बाकी सिलेबस देखें कि आपका प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। और लास्ट 2 वीक्स में आप फिर उन कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करें और उनको दोबारा से पढ़ने की कोशिश करें, मे बी फ्रॉम अ डिफरेंट रिसोर्स, या कोई वीडियो देख लें अगर आपसे टेक्स्ट सही तरह नहीं हो रहा है, एंड मे बी दैट वे आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।